So today we'll see about Ocean Island Basalt or OIB. So oceanic island basalt, normally it is basaltic in composition, that erupt in ocean region. So this is basaltic in composition. That's why it is called as ocean island basalt, and it erodes away from the tectonic plates. It erodes away from tectonic plate. So that means, so oceanic island basalt, it is a product of, you can say, hotspot. So other than the tectonic plates, only one place where volcanism will occur, that is hotspot. If the hotspots are present below the oceanic crust or oceanic plate, you can say, then volcano can occur there, and they will produce mound-like structure. We will study it in oceanography, that is called here goets, then sea mounds, all type of features, and island also produce. So during a passage of a tectonic plate below a hotspot, suppose there is a hotspot here. So below the passage of tectonic plate over a hotspot, volcanism will occur, because if any plate that passing over an hotspot, it will produce volcanism. The cause of volcanism, is magmatic underplating, or we'll say increase in temperature. थोड़ा हम पढ़ी थे जोटी तुम वोल्कानिज्म होची कोटी तुम हॉटस्पॉट रीजन में, तो हॉटस्पॉट रू कौन मैग्मा कंटिन्यूअसली राइज करे, मैग्मा कंटिन्यूअसली राइज कला पर इट विल you can say gather here. So ये जगह गैदर होला परे तापरे से धीरे धीरे ए प्लेट को मेल्ट करेबो, इट विल फ्रैक्चर प्रोड्यूस करेबो एंड वोल्कान हो। जो जगह हॉटस्पॉट प्रेजेंट हो माने से जगह वोल्कान होबा कंफर्म। So due to the presence of hotspot, in any plate, volcanism can occur. जदि सेटा तुमर कॉन्टिनेंट रीजन ने हला ताल ता कोंती CFB, कॉन्टिनेंटल फ्लोर बासाल्ट। तो हमें CFB कहबा कॉन्टिनेंटल फ्लोर बासाल्ट। यदि ओशनिक रीजन हला ताल ओशनिक आइलैंड बासाल्ट। तो ओशनिक आइलैंड बासाल्ट सिंपल, it is a result of volcanism or the hotspot. If any oceanic plate that passing through a volcanic or passing through a hotspot, it will produce volcano. हमरो जोटी hotspot थाए, hotspot places are constant. Hotspots of place वाला सब कौन थाए, constant थाए। तो जे कौन सी प्लेट ता अपने पास कला पने से सेटी volcanism ताओ। So देखो, so suppose this is a tectonic plate, this is a hotspot. So the tectonic plate, it is gradually crossing the hotspot. That means कि मोर ये जो पार्ट टा ऑलरेडी हॉटस्पॉट पर जाए, ऑलरेडी हॉटस्पॉट प्लेस टा को क्रॉस करथिबो, तो एठी तुमरो ऑलरेडी प्रोड्यूस हेतिबो सब, यू कैन से वोल्केनिक कोन टाइप ऑफ थिंग बा माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन प्रोड्यूस हे। सो जो वोल्केनिक माउंटेन एठी प्रोड्यूस होची बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ दिस प्लेट ओवर दिस हॉटस्पॉट। सो तळे ए पोर्शन टा ए हॉटस्पॉट पर थिला, एटा प्रोड्यूस हेतिबो, तापर ग्रेजुअली एगुरा सब प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो एमदी चेन ऑफ आइलैंड से प्रोड्यूस करे। तो आइलैंड प्रोड्यूस करिवो कि तुमर आइलैंड माने कोन देखो, सपोज एटा गोटे ओशनिक प्लेट हला, सपोज एटा गोटे ओशनिक प्लेट हला। तो यदि ओशनिक प्लेट अछि ताले तो ओशनिक क्रस्ट इट इज सबमर्ज्ड बाय, यू कैन से ओशन वाटर। तो ओशनिक क्रस्ट ऊपर तुम किछि वाटर पाबो कोन ओशन वाटर पाइबो। सपोज दिस इज सी फ्लोर, एटा सी फ्लोर हेले तुम सपोज धरा यू विल फाइंड वाटर
This is sea floor. So hotspot যদি প্রেজেন্ট আছে তাহলে এটি ভলকানিজম হবো। जो ভলকানিজম हुए जहाँ भी এটি তোমার মাউন্টেন প্রডিউস হবো, it doesn't always emerge to the sea level. sea level উপরକୁ ସେ emerge କରି ପାରେନି ସବୁବେଳେ। যদি sea level ଉପରକୁ emerge କଲା ତ it will be an island, ସେଟା କହିଯିବ ଗୋଟେ island ହେଇଯିବ। ଯଦି sea ଭିତରେ ବା within sea level ରହିଲା ତାହେଲେ normally ଏଟାକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ सी माउंट बोएट्स ये सब ना दे पारे होला। सो नॉर्मल वोल्केनो जेतबे प्रोड्यूस वोल्केनो जेतल होची अंडर हॉटस्पॉट, जदी प्लेट र मोशन बहुत स्लो अछि, जदी प्लेट र मोशन बहुत स्लो अछि ताले ए पर्टिकुलर प्लेस इट विल रिमेन अंडर द हॉटस्पॉट फॉर लॉन्गर पीरियड। जदी स्लो अछि, जदी स्लो अछि ताले गोटे पर्टिकुलर हॉटस्पॉट रीजन ता अधिक टाइम पर्यंत गोटे तुमर गोटे प्लेट गोटे हॉटस्पॉट अंडर रे अधिक टाइम पर्यंत रही पारे। सो अधिक टाइम पर्यंत रहिले ताले एठी अधिक समय पर्यंत वोल्केनो हबो। तो अधिक समय पर्यंत वोल्केनो हेले तुम गोटे आइलैंड पाई परियो बा अधिक मैग्मा अक्युमुलेट हबो। अधिक मैग्मा अक्युमुलेट हेले यू विल फाइंड ए आइलैंड। तुम को पाइबो आइलैंड पाई परियो। तो ओशनिक आइलैंड सेमती प्रोड्यूस हुई। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हावाई आइलैंड। हावाई आइलैंड होची हावाई हॉटस्पॉट अंडर अछि। तोर रियूनियन आइलैंड अछि, रियूनियन हॉटस्पॉट अंडर अछि। जे कोन हॉटस्पॉट द ओशन भीतर प्रेजेंट अछि तो से जगह रे तुमर वोल्केनो हेले सी विल प्रोड्यूस ए चेन ऑफ आइलैंड। यू कैन से को प्रोड्यूस करो चेन ऑफ आइलैंड। जो पोर्शनटा प्लेट रो जो पोर्शन हॉटस्पॉट तळे थिबो से पोर्शनटा तुमर वोल्केनिज्म दो। तो ग्रेजुअली जो आइलैंड प्रोड्यूस हुए देन जो इट विल पास द हॉटस्पॉट। सपोज इट आइलैंड प्रोड्यूस हला एटा हॉटस्पॉट अबिगा पास करी गलानी तो ए पार्टटा कोन हो ग्रेजुअली एटा इरोड हबो। इरोड हेले सेटा पुरी तोरा पळेबो बिलो द सी लेवल। कारण एटा इरोड हबो बिलो द सी लेवल पळेबो तो ताको सी माउंट्स आ कोएट्स कहबो। तापर ओवर टाइम कोन हो सी कोल्डर हे जिवो। যদি এটি যেতলে প্রডিউস হচ্ছে ইনিশিয়ালি ইট উইল বি হটার, যেতলে এজ বড়ি বড়ি যাব সেতে কোল্ডর হব, সেতে তোমার ডেন্সর হয়ে যাব, তো সিঙ্ক করে যাব ধীরে ধীরে। So then comes to types of oceanic island basalt. So then you can classify into two types. One is oceanic island tholeiites. Tholeiites that you will find more iron percentage. Then oceanic island alkali basalt will get more potassium percentage. So on the basis it is divided into two types: oceanic island tholeiites, oceanic island alkaline basalt. Then we'll see what is the composition or petrology or geochemistry part you can say. So we'll say OIB petrography. OIB petrography. So हम जो midocenic ridge basalt पढ़ते हैं, midocenic ridge basalt also tholeiitic condition है तुम्हारा पता है, it is also tholeiitic ridge. So same thing OITs, OIB रा जो OITs है, oceanic island tholeiites. So OIT, it is similar to, it has similar composition as MORB, midocenic ridge basalt. So it is similar to midocenic ridge basalt, but in case of OIT you will have higher K2O TiO2 percentage. You have in OIT you have higher K2O TiO2 and P2O5 percentage. K2O TiO2 and P2O5 and lower Al2O3 percentage. So you will get lower Al2O3 than MORB and higher K2O TiO2 P2O5 than MORB. So you can say them than MORB. So in OIT you are finding mostly composition are similar, but
in OIT you will get more K2O TiO2 P2O5 अधिक तमे पाइबो कोन K2O TiO2 P2O5 higher percentage in OIT than MORB and lower percentage of Al2O3 than MORB. Then in case of your OIT or OIB condition, olivine is the dominant phenocryst phase in OIT. So OIT रे तुम्हें पाइबो कोन olivine होची dominant phenocryst phase. So phosphorate approximately from 70 to 90. Phosphorate 70 to 90 means we are getting phyllite. Phosphorate 70 to 90. It is the dominant phenocryst in OIT. So OIT रे तुम्हें dominant phenocryst पाउछ कोन तुमरा olivine ता सहित तुम्हें chromium spinel किछि पाइ तापर इन केस ऑफ OIT plagioclase और clinopyrazine तुम्हें ground mass पाइ plagioclase and clinopyrazine is in ground mass in OIT. So oceanic islands will actually you will find plagioclase, clinopyrazine, but they are in ground mass. So this is the characteristic of OIT. Then we'll see OIA. So OIA, they are characterized by higher alkali and lower silica content. So OIA, it has higher alkali percentage and lower SiO2. So they have higher alkali and lower SiO2 percentage. So in case of OIA, because of the lower silica content, olivine is more ruminant, you can say, because silica less, if silica percentage is less, it will be considered under saturated condition. So more olivine you will find in OIA. So it is occur in both phenocryst phase and ground mass phase in case of oceanic island basalt. And olivine you will also find from phosphate 30 to 90. Okay. Then in case of usually in case of oceanic island alkali basalt, oceanic island alkali basalt in OIA. Okay, so in OIA generally we will find tomorrow titanium rich augite. Only one pyroxene will be found here. Only one pyroxene, that is titanium rich. Sometimes in OIA you will find amphibole, so that indicate करे volatile condition, volatile content condition. So these are different petrography of OIB. Then comes to trace elements, OIB trace elements. So in case of OIB, you will get the LILE trace element, LILE, what called large iron lithophile element. So in large iron lithophile element, you will find potassium, rubidium, cesium, barium, all this type. Potassium, rubidium, cesium, barium, Pb2 plus, all these type of will belongs to LIL. So in case of OIB, LIL trace element, those are potassium, rubidium, cesium, barium, those are called as incompatible. Those are called as incompatible. एवरा सब जाक अब इनकम्पैटिबल है पे तुम्हारा बेरियम टा हबनी थी इनकम्पैटिबल, बेरियम विल बी कंपैटिबल. पोटेशियम, रुबिडियम, तुम्हारा पीबी इगरा सब है पे का these will be except this incompatible
and barium cesium এটা আসব compatible compatible মানে মনে রাখথিব যে মানে অধিক সবুবেলে enriched হেবে solid than liquid তো easier way মু তো বুঝুছি compatible element incompatible element কোন তো যেতেবেলে তোমার crystallization start হব these things are present within the melt सब जिनस melt रे थो तो যেতেবেলে crystallization start হব जोगरा compatible element से माने आगे solid produce करिवे सपोज धरो कि तुमर कि हमें बाउंस रिएक्शन सीरीज देखि आती मैग्नीशियम कैल्शियम मेंबर गुरा आगे क्रिस्टलाइज करत पोटेशियम सोडियम मेंबर गुरा लेट रे क्रिस्टलाइज करत तो जेतेबेले क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होची मैग्नीशियम आयरन कर अधिक टेंडेंसी रहउची कि सॉलिड प्रोड्यूस करी सेबेले जो मान कर अधिक टेंडेंसी रहे सॉलिड प्रोड्यूस करिया को से माने सॉलिड रे अधिक कंसंट्रेटेड होंती दैन द लिक्विड जो मान कर टेंडेंसी नाही सॉलिड प्रोड्यूस करिवार तो से माने अधिक कंसंट्रेटेड होंती इन द लिक्विड दैन सॉलिड तो विथ प्रोग्रेसिव क्रिस्टलाइजेशन इनकम्पैटिबल एलिमेंट टा को हुए मेल्ट रे एनरिच्ड हुए कंपैटिबल टा सॉलिड रे एनरिच्ड हुए सो सेट पे तुमरो LILE तुमे अधिक पाइबो होची कि इनकम्पैटिबल एलिमेंट हिसाब रे दीस थिंग्स आर फाउंड विद इन द मेल्ट एंड दिस विल बी फाउंड विद इन द सॉलिड केने जोटी प्लाजियोक्लेस थिबो हला जोटी प्लाजियोक्लेस थिबो माने सेटी स्ट्रोंशियम और बेरियम दे विल नॉट एक्ट एज अ इनकम्पैटिबल एलिमेंट मतलब स्ट्रोंशियम बेरियम आर इनकम्पैटिबल जदि प्लाजियोक्लेस क्रिस्टलाइज करछि ताल स्ट्रोंशियम बेरियम हेबे नाही तापर किछा तमे HFS एलिमेंट पाइबो हाई फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंट जो थोरियम हो यूरेनियम हो सेलेनियम जिरकोनियम हाफनियम नियोबियम एवरा सब होछ का मोरा HFS एलिमेंट यूरेनियम थोरियम जिरकोनियम हाफनियम एरा सब होछ इनकम्पैटिबल एलिमेंट सो इठी तुमे अधिक एनरिच पाइबो इन OIB रे तुमे अधिक पाइबो देन MORB so HFS गुरा भी also it is incompatible here these are also incompatible so इठी तुमरो OIB कंडीशन हला so OIB रे तुमे अधिक पाउछ कोन ए HFS incompatible element than your MORB so that's why how we can distinguish between different basalt हमें एवं डिफरेंट बासाल्ट भितर डिस्टिंग्विशन करबे